I wish to move under Rule 244B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that a special committee may be constituted by the Honourable Speaker comprising 16 members of the National Assembly from Treasury and Opposition benches and the Minister of Parliamentary Affairs to discuss, analyse and firm up recommendations regarding issues related to the Parliament and its smooth functioning. Honourable Speaker is authorised to make changes in the composition of the committee. As and when required, the committee will present its report to the House, sir. Thank you. Now I put the motion to the House. जी एडिशन क्या चाहते हैं गौर साहब? इसी तरीके से आपको याद होगा हमने एक रेजोल्यूशन भी पुट करने की कोशिश की, इसमें लिखा है फॉर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें पार्लियामेंटेरियन का वर्ड्स भी डाल हमने पार्लियामेंटेरियन की रिक्वेस्ट की, हमारे बड़े सारी रिजर्वेशंस इट इज पार्लियामेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट पार्लियामेंटेरियन. पार्लियामेंट एज इंस्टीट्यूशन इज डिफरेंट, पार्लियामेंटेरियन का वर्ड्स भी डाल दे ताकि कंप्रेहेंसिव हो जाए. पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंटेरियन ये मुझे ऑथराइज कर दिया इसमें चेंजेस करने के लिए. पार्लियामेंटेरियन का लफ्ज भी डाल दें. पार्लियामेंटेरियन का जनाब स्पीकर वो बड़ा इन्होंने बड़ा क्या पार्लियामेंट कंप्लीट है विदाउट पार्लियामेंटेरियन? नहीं जी जनाब स्पीकर जी फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट पर आपको रिक्वेस्ट है, ये हमने उस वक्त रिक्वेस्ट किया. थैंक्स गॉड कॉमन सेंस फाइनली ये मुझे ऑथराइज कर दिया, मैं कर दूंगा. पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंटेरियंस का लफ्ज उसमें आ जाए. इतनी महमूद खान साहब. वकील तो नहीं हूँ, इस ड्राफ्ट में जनाब स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र और पार्लियामेंट का जिक्र आना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ बिजनेस एंड पार्लियामेंट को हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे. जी हाँ, नवीद का माइक खोलें, माइक पे कहें नवीद. Sorry, I agree with Honourable Member Mahmood Khan. Repeat करें what do you agree? That the word constitution and rules of business and rules of business, they flow from the constitution, but parliament and constitution are two fundamentals on which our democracy is based, and they should be part of this. जी अता साहब. वेग और जितना फैलाएंगे इस इशू से तवज्जो हट जाएगी, बाकी इश्यूज के लिए अलग कमेटियां बना दें सर. बट पार्लियामेंट की स्मूथ फंक्शनिंग और पार्लियामेंट के हवाले से इट्स एन ऑल इनकम्पसिंग क्लॉज सर, आपको एम्पावर किया गया है. इसको सर इस कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ बिजनेस का भी मेंशन कर दीजिए. ठीक है जी. नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस. द क्वेश्चन इज दैट द मोशन हैज मूव्ड बी अडॉप्टेड. ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted unanimously. मेरा ख्याल है माहौल बहुत अच्छा है इस वक्त और अल्लाह ताला करे कि हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम इसमें बेहतरी ला सकें. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनका शुक्रगुजार हूँ. ख्वाजा आसिफ साहब आपका शुक्रगुजार हूँ. बैरिस्टर गौहर साहब आपका, इसहाक डार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, आतिफ खान साहब, हम सब ने जो आज बात की पॉजिटिव. हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ. हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हुकूक की बात करें, हम इश्यूज़ की बात करें. मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि आपने जो बाहर जाके बात करनी उसके बजाय यहाँ करें, मगर जो किताब कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, रूल्स कहती हैं, उसके दायरे में रह के करें. तो फिर तो कोई वजह नहीं है. आप गवर्नमेंट को के इश्यूज़ पे करें, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे करें, ज़रूर करें. ज़ातियात से हम निकल जाएं. अभी भी उम्मीद है. मैं जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी विप्स की, तो गवर्नमेंट की विप्स की ये डिमांड थी कि हम 2/3 हैं और ऑपोजिशन 1/3 है. हमें 2 दफ़ा बोलने का मौका मिले और ऑपोजिशन को 1 दफ़ा मिले. आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें जिसमें शायद ट्रेजरी बेंचेस खुश नहीं हुए. आपको ज़्यादा मौका मिला है बनिस्बत ये, और मैं सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, मैंने हर महीने का कंपाइल कराया हुआ है, इसलिए कि ऑपोजिशन यहाँ नहीं बोलेगी तो कहाँ बोलेगी. हम तो चाहते हैं आप यहाँ पे बात करें. जो ख्वाजा साहब ने बात की, 2 wrongs do not make a right, आई थिंक उसमें बहुत वज़न है. मैंने जो कल किया, जो मेरा ज़मीर कहता था और जो मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैंने उसके मुताबिक किया. मैं उस दिन रात को जब तक मुझे इत्ला थी तब मैं जो कर रहा था, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि कुछ पर्दे रखना भी ज़रूरी होते हैं. जो मैं कर सकता था वो मैंने किया.
مگر جب افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی جماعت کی طرف سے یہ ہے کہ میں اس کا حصہ تھا. میں نے نیشنل اسمبلی کے اوپر سے شروع کیا, نیچے سے نہیں. سارجنٹ ایٹ آرمز کی رسپانسبلٹی تھی, ہی از ان چارج فار دا سیکیورٹی. ان کو بھی سسپینڈ کیا اور ان کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے رزسٹ نہیں کیا, جو لوگ اگر اندر آئے تھے ان کو رزسٹ نہیں کیا. سی ڈی اے کے سٹاف جو ہماری الیکٹریسٹی کے حوالے سے ان کو سسپینڈ بھی کیا ہے اور ان کو یہاں سے امیجیٹ ٹرانسفر کے لیے کیا ہے, اس لیے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. مگر میں ایک تلخ بات کروں گا, تلخ اس میں نہیں کروں گا بٹ اس کا نتیجہ شاید اچھا ہو. 17/12/2018 یہ اس وقت آپ کی حکومت تھی. یہ ایک آفس آف دا اٹارنی جنرل آف پاکستان سے یہ خط آیا جو میں آپ کو دے بھی دوں گا اس کے بعد. یہ محترم خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے ہے, ان کے پروٹیکشن آرڈر ہونے تھے. اس میں اینڈ میں پڑھ دیتا ہوں کہ کیا لکھا تھا. اور یہ صرف خواجہ صاحب کے بارے میں نہیں ہوا تھا, یہ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں, احسن اقبال صاحب کے زبانیں, رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں, یہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں. ایز سچ this request does not constitute sufficient ground for the issuance of a protection order. یہ میں آپ کو اس کی کاپی دے دوں گا. دوسرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, یہ منسٹری آف لاء کی طرف سے ہے, 22/6/2019 کو یہ آپ کی حکومت تھی. اس کا میں آپریٹو پارٹ اینڈ کا پڑھ دیتا ہوں. The Honorable Speaker may well exercise his discretion by not issuing the protection orders in question. This is more so as the presence of the detainees is not necessary for purpose of making oath as a member of the National Assembly, as noted in the Baldev Kumar case. The peculiar facts of the matter are such that the scale of public welfare and interest appears to crave for a rejection of the request of the issuance of the protection order. یہ دوسرا ہے, یہ میں جی یہ لاء منسٹری کا ہے. اور پہلا سعد رفیق صاحب کا, دوسرا بھی یہ دیکھ لیں کون ہے, میں تو صرف آپریٹو پارٹ. اور تیسرا ہے 6/8/2019 when the request for production of order merely says to attend the proceedings of the ongoing 13th session of the National Assembly without mentioning as to why the presence is necessary. The request ex facie does not constitute sufficient grounds for the issuance of production order. یہ میں آپ لوگوں کی نالج کے لیے یہ آپ کو دے رہا ہوں. بٹ جس طرح پارلیمنٹری لیڈر پی ایم ایل این نے اور جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے, ڈار صاحب نے, سب نے کہا وی آر موونگ ٹورڈز بیٹرمنٹ. 2 wrongs do not make a right. I do not agree. جو آپ کی گورنمنٹ میں یہ آرڈرز تھے میں ان سے ایگری نہیں کرتا ہوں. یہ not issuing production order was not the right thing to do then, it is not the right thing to do now. I will inshallah do what is appropriate, what is required and what is necessity for the parliament کی عزت کے لیے. میں انشاءاللہ اس کی جو انسیڈنس ہوا ہے اس کی تہ تک جانے کی کوشش کروں گا. اور پلیز میری ریکویسٹ ہے, یہ موقع ملے, آپ لوگ اگر میرے گھر آئیں تو پلیز, وہ گھر جو ہے نا وہ کیمپ آفس ہوتا ہے. اگر آپ مجھے ملنے آئیں تو یہ نہ سوچیں کہ کیا, بیکاز اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے اور دونوں کا اسپیکر کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے تاکہ ماحول اچھا کیا جائے اور ہاؤس کی پروسیڈنگز کس طرح چلانی. اکیلی گورنمنٹ نہیں چلا سکتی, اکیلی اپوزیشن نہیں چلا سکتی, تو اس لیے ہمیں بہتری کی طرف. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم یہ کمیٹی آج ہی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, اس پہ ہم ڈیلے نہ کریں فردر, اور اس کو ہم موشن موو کرتے ہیں. تشریف رکھیں غور سے, موشن موو کر کے میں آج ہی کانسٹیٹیوٹ کروں گا کمیٹی اور آپ لوگوں سے نام لے کے, تاکہ یہ کل کے بجائے آج اس پہ کام شروع ہو جائے. اور میں اپنی ذمہ داری کر لوں گا, آپ فکر نہیں کریں. I wish to move under Rule 244B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that a special committee may be constituted by the Honorable Speaker comprising 16 members of the National Assembly from Treasury and opposition benches and the Minister of Parliamentary Affairs to discuss, analyze and firm up recommendations regarding issues related to the Parliament and its smooth functioning. Honorable Speaker is authorized to make changes in the composition of the committee as and when required. The committee will present its report to the House, sir. Thank you. Now I put the motion to the House. The addition کیا چاہتے ہیں؟
गौहर साहब। फिर इसी तरीके से आपको याद होगा हमने एक रेजोल्यूशन भी पुट करने की कोशिश की, इसमें लिखा है फॉर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें पार्लियामेंटेरियन कवर्ड्स भी डाल दें। हमने पार्लियामेंटेरियन की रिक्वेस्ट की, हमारे बड़े सारी रिजर्वेशन It is parliament is incomplete without parliamentarian. पार्लियामेंट एज इंस्टीट्यूशन इज डिफरेंट, पार्लियामेंटेरियन कवर्ड्स भी डाल दें ताकि कंप्रेहेंसिव हो जाए, पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंटेरियन। ये मुझे ऑथराइज कर दिया इसमें चेंजेस करने के लिए। पार्लियामेंटेरियन का लफ्ज भी डाल दें, पार्लियामेंटेरियन का जनाब स्पीकर वो बड़ा इन्होंने बड़ा क्या पार्लियामेंट कंप्लीट है विदाउट पार्लियामेंट पार्लियामेंटेरियन? नहीं जी जनाब स्पीकर जी। फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट मेरा आपको रिक्वेस्ट है, ये हमने उस वक्त रिक्वेस्ट किया, थैंक्स गॉड कॉमन सेंस फाइनली ये मुझे ऑथराइज कर दिया, मैं कर दूंगा पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंटेरियंस का लफ्ज उसमें आ जाए, बस इतनी सी महमूद बात। खान साहब। वकील तो नहीं हूँ, इस ड्राफ्ट में जनाब स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र और पार्लियामेंट का जिक्र आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ बिजनेस एंड पार्लियामेंट को हम Yes. इसमें इंक्लूड ये कर आना लेंगे। चाहिए। जी हाँ, नवीद का माइक खोलें, माइक पे कहें नवीद। Sorry. I agree with Honorable करें Member क्या? Mahmood Khan. Repeat करें, Ajad what do you Zai, agree? that the word constitution एंड रूल्स ऑफ बिजनेस and rules of business, they flow from the constitution, but parliament and constitution are two fundamentals on which our democracy is based, and they should be part of this. जी अता साहब। वेग और जितना फैलाएंगे इस इशू से तवज्जो हट जाएगी, बाकी इश्यूज के लिए अलग कमेटियां बना दें सर, बट पार्लियामेंट की स्मूथ फंक्शनिंग और पार्लियामेंट के हवाले से इट्स एन ऑल इनकम्पसिंग क्लॉज सर, आपको एम्पावर किया गया है इसको सर इस कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ बिजनेस का भी मेंशन कर दीजिए। ठीक है जी। Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted unanimously.